Welcome to another video of ProChartAnalysis Market Watch EOD. So आज का दिन कैसा रहा आपका? Today I will be continuing with our analysis जो अपन ने swing trade में सीखी थी, and from there we will be taking you to intraday so that you can connect the dots in bigger picture. So here यहाँ पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, हमने डिस्कस भी किया था. इफ़ यू हैव नॉट चेकड आउट द लिंक और द वॉच द प्रीवियस वीडियो, प्लीज डू चेक दैट आउट. आई विल बी giving the link of that video in the information icon, also in the description below. So what was the base idea for entering into a swing trade was, जब भी price moving average के पास, I'll just show you the which moving average we will be using. That's McGinley dynamic and pivot Fibonacci. Okay, so the detailed discussion I have done in the previous video, so do that, check that out. So now here if we move, जब भी प्राइस मूविंग एवरेज के पास और पिवोट के पास है, दैट्स द अर्ली एंट्री पॉइंट फॉर यू वेयर यू हैव द लीस्ट रिस्क टू एंटर. सो अगर यहाँ पे देखा जाए तो दिस रेड कैंडल टुक एग्जैक्ट सपोर्ट, इसने क्लोजिंग भी इसके ऊपर ही दी. सो दिस वाज अ इंडिकेशन दैट प्राइस हैज हाई प्रोबेबिलिटी टू गो अप. हाउएवर ड्यूरिंग द डे इफ यू नोटिस, इसने एक विक बनाई. सो इट मीन्स कि मार्केट यहाँ तक आया था, इट टुक पिवट सपोर्ट and closed above the moving average. So this was a very good indication for market, hidden indication you can say. Just the one who knows how to read candlestick pattern at the right levels, they could have figured it out. So next day मौका भी नहीं मिला buyers को enter करने का. So the closing was around 14,700 and market open at 754. ठीक है. So उसके बाद भी शायद समझ में ना आए मार्केट को, because the market has been consistently from continuously from 16th Feb is consolidating in sideways, but it was quite volatile. The move was around 100 points to 400 points in Nifty. So with that thought, if we would have gone long here for positional, so we would be able to capture at least, चलो आप 50% से भी लेते हैं तो 14,800 to 15,100, ऑलरेडी 300 पॉइंट्स कवर कर लिए होते हैं 2 दिन के अंदर. पहली चीज़ ये, कल जब अपन ने एनालिसिस किया था तब ये भी कहा था कि द वे द कैंडल हैज़ क्लोज्ड, इट हैज़ हाई प्रोबेबिलिटी टू ओपन गैप अप. एनालिसिस वी डिड, it looks like that it acted exactly the way we analyzed. So if you want to learn such kind of details and want to excel in chart reading, please do let me know. You can reach out to me. I have given my contact number, so please leave a message and we'll get in touch with you. So second is let's move to Banknifty. In that, the same structure was forming, but the candle was below the moving average and the pivot. But the very moment, the next day when candle opened and price went higher, so here probably either you could have waited for the candle to close or seeing the strength of the Nifty and Banknifty. अगर मैं इस चार्ट को छोटा कर देता हूँ like on 15 minutes. Okay, so I explained you this candle for intraday basis. बहुत अच्छी कैंडल थी ट्रेड करने के लिए. And also छोटे टाइम फ्रेम के अंदर इस कैंडल को अगर अपन यूज करते हैं, so this was acting as a resistance. The one who is using moving averages, they can trade it on intraday basis also with this exact setup. So this was the point where it took support of moving average and pivot and price shot up. So somewhere here also if you would have entered, the price went higher and higher, and हमने कल इसके बारे में भी कहा था कि it has high probability that it can either give small profit booking or most likely it will go gap up. So that's all it happened. Changing the chart to 5 minutes. So आपको 5 मिनट के अंदर opportunity ढूंढनी थी basically. इसमें प्राइस प्रीवियस डे के रेंज के पास नहीं आया, so you did not get entry. But if you notice something, let's mark the range of 5 minutes range breakout. For volatile market you can use 5 minutes. Otherwise if you want to, you are still conservative, you can go for 15 minutes range. In coming videos I will explain you the concept of 5 minutes, 15 minutes and also 1 minute candle of the day, which usually happens on Thursday. So we'll try to bring that as and when I see. But at this very moment today if you see 5 minutes की जो रेंज का ब्रेकआउट था, एक ही टाइम पे इसने ब्रेकआउट only once इसने ब्रेकआउट दिया and it came to retest. Probably you could have gone and short here,
एंड आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता, इट्स ऑल राइट, इट्स पार्ट ऑफ गेम, बट द पॉइंट इज कि आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा होता. बट देन वंस यू नो दैट कि दिस इज रेसिस्टेंस, प्राइस यहाँ पे आया, you could have traded this range. If you were comfortable, you can. If you're smart enough how to handle these and such short rally, short like scalping kind of thing, if you know how to use it, you could have traded this once here, second was not exactly here, but here you could have tried. But I think यहाँ पर भी आपको stop loss नहीं hit होता, but target भी नहीं मिलता. So price was kind of, market was sideways since the profit gap up होने के बावजूद भी इसने gap fill नहीं किया and it halted. So there are two ways you can say this. Either it was distributing, and I highly doubt that this was distributing. It was kind of gathering a strength to go further high. Sorry. So with that thought, tomorrow what you can do, that your range is even smaller now to trade. Let's remove this. Also understand the pivots are building up higher. ठीक है, तो मार्केट का स्ट्रक्चर ओवरऑल बुलिश लग रहा है अब तो. एंड ऑल्सो यू नो दैट एवरी टाइम व्हेन प्राइस कम्स टू मूविंग एवरेज इट शूट. सो इफ मार्केट इज स्टिल बुलिश on 15 minutes time frame, as and when it gets support here, you find any kind of candlestick pattern like bullish engulfing, so you can go long for intraday. And at the same time, if you are just want to follow the price and the ranges, so if it gives breakout on the upside, go long from here. If it's breaks down like breakout downside, then go short. So that's the intraday setup. So let's move to other. निफ्टी मेटल में भी आज काफ़ी ग्रीन दिख रहा था. एंड पिवट का अगर देखें तो पिवट इस पिवट से पहले बैक टू बैक पिवट्स नीचे बन रहे थे. इट मीन्स कि मार्केट वाज डाउन साइड एंड स्पेशली दिस निफ्टी मेटल. एंड इसके बाद इफ यू सी, इसने ऊपर की तरफ, प्राइस इज ऑल्सो अबाउट पिवट. Second pivot is also shifting on higher side. It means they are kind of again picking up the pace on the upside. However, I would still wait for confirmation. जितना ज़्यादा गैप होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होगा. जैसे कि यहाँ से हमने ये चीज़ डिस्कस की थी ना, स्ट्रेटजी. एवरी टाइम द गैप इज गोइंग हायर, इट मीन्स देर इज अ मोमेंटम इन द स्ट्रेंथ. So the trend is stronger. So pick that way, try and analyze that way, and then your probability to lose will be less. Then pharma also did not do so great today. FMCG ने भी कुछ खास नहीं किया, but FMCG में अगर देखें तो pivots are building still on higher side. Maybe just because of this one day move, market is kind of making pivots on higher side. So let's see. But इस दिन price pivot के ऊपर है. But today if you notice, pivot ऊपर है, price नीचे आया है. So this is the first sign that okay, there is some kind of consolidation or weakness. Now confirmation will be there when pivot point इसके नीचे बनने लगे, प्रीवियस डे की रेंज से नीचे बनने लगे. So tomorrow we will see pivot कहाँ बनता है, and accordingly we will look for trade. So then we move to Nifty IT के अंदर प्राइस ओपन गैप अप एंड pivot भी देखें तो ऑलमोस्ट उसी रेंज के थोड़ा सा ऊपर था. So it was a kind of sign कि ठीक है, यहाँ से प्राइस रिवर्स होने की पॉसिबिलिटी है. So we will check out some stock. And Nifty Auto did extraordinary move. Like Tata Motors ने भी approx 3% का move दिया था. And Balkrishna Industries yesterday gave 10% plus move. Or if there are any which I have missed out, please do comment and let me know. I will check that out. And basically as per strategy अगर अपन देखें previous day की range का, तो हमें मौका ही नहीं मिला बेसिकली कहीं एंट्री पाने का. सो वी डिड नॉट गेट एंट्री इन ऑटो. इंडेक्स बहुत स्ट्रांगली ऊपर ओपन हुआ एंड चेंजिंग द चार्ट टू 5 minutes, so it did not come. But yes, if you do not have such kind of structure where you can get entry on based on previous day's range, the easiest way to find out is 5 minutes range either side breakout. So in 5 minutes here there was a quite like whipsaws. You can with practice you can avoid this kind of whipsaws. And then price came down, and if you see, since it was 5 minutes time frame, you see here Morningstar. This Morningstar was a signal that price has probability to reverse from here, and then it gave breakout and it went on one direction. And where it could fall was the first entry like point was
it took support here on this moving average. Second time also it took support. So basically it is losing its momentum, but chart is still in uptrend. So now let's move to stock specific, which is quite interesting today. SBI हमने चूज किया था, changing the chart to daily, and as we decided कि previous day की range के बाहर ही होगा तो we will trade. Now one thing you need to understand here, changing chart to 5 minutes, आपकी entry point कहाँ trigger होती है. बेसिकली यहाँ पे एक सपोर्ट था और आपका SL डेफिनेटली आपका SL हिट हो गया. नाउ द लर्निंग हियर यू कैन टेक इज इफ यू कैन कंबाइन दिस विद मूविंग एवरेज, यू सी देयर वाज अगेन रिवर्सल, बट प्राइस ऊपर तो गया. आई थिंक 1:1 के हिसाब से. लेट्स सी इफ वी गॉट 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड. समवेयर इस कैंडल के ऊपर अपनी एंट्री थी एंड स्टॉप लॉस वुड हैव बीन टुडेज लो एंड 1:1. And we missed out with very few points. You see, like 387.65, 387.75 से price reverse हुआ and our profit was 388. So many times what happens is you missed out from very few, very decimal points, fractions of points you may miss out your targets, and same way it happens with the stop loss also. कुछ पॉइंट्स से आपका स्टॉप लॉस बच जाता है बिकॉज ऑफ दिस एक्यूरेसी ऑफ दिस सिस्टम. ठीक है, सो पार्ट ऑफ गेम है. इसमें भी लग गया, 2 बार लग जाता है बेसिकली. एक बार यहाँ स्टॉप लॉस और अगर दूसरी बार यहाँ लेने की कोशिश करते कंबाइनिंग विद मूविंग एवरेज. सो यू शुड बी लुकिंग फॉर एक्स्ट्रा कन्फर्मेशन टू गेट इन टू द ट्रेड अगेन. वंस इट वॉज इन द रेंज, आई डोंट रिकमेंड ट्रेडिंग लाइक इन ओवर ट्रेडिंग लाइक ट्वाइस और थ्राइस, बट जस्ट इफ यू सी और इफ़ यू कुड हैव वेटेड कि यहाँ पे जब एग्जैक्ट सपोर्ट नहीं मिला, दूसरी बार भी जब यहाँ पे एग्जैक्ट सपोर्ट नहीं था, लेट्स से वी डोंट हैव मूविंग एवरेज फॉर नाउ, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, यू नो यू हैव टू प्रैक्टिस टू यूटिलाइज, you combine those moving averages into your setup, whichever you have been using or you are modifying it, but पहले उसे प्रैक्टिस करो so that you can read it exceptionally good, then that's where you can make extra money. एंड अदरवाइज सिंपल स्ट्रैटेजी के हिसाब से अपन अगर देखें तो इट वॉज हैड काइंड ऑफ, यहाँ पे एक स्टॉप लॉस डेफिनेटली लग जाता है एंड इट इज़ नॉट सपोर्टिंग एग्जैक्टली, बट यहाँ पे तो एंट्री का सवाल ही पैदा नहीं होता बिकॉज प्राइस इज क्वाइट इनसाइड दिस प्रीवियस डेज रेंज एंड केम अगेन आउटसाइड. सो यू शुड वेट फॉर कन्फर्मेशन. देन अगेन प्राइस केम डाउन एंड हियर इट वॉज अ सपोर्ट एंड देन अगेन यहाँ पे जब रेंज के अंदर आया इट वॉज एक्टिंग एज अ रेसिस्टेंस. सो ऑन दिस कैंडल लो, like this candle low, you could have gone short keeping the high of day's range like outside the range of as SL, and here you could have gained, definitely you could have got 1:1 ka risk reward, maybe more than 1:1 or 1:2 bhi. So this was State Bank. IndusInd Bank, definitely it was acting exactly as Banknifty, just 5 minutes की range के अंदर ही breakout like trade कर रहा था. बट अगर यहाँ पे पोजीशन कैरी ऑन की होती तो वी वुड हैव गॉट लाइक 950 to 976, सम 2% का 2% और 1.8% का मूव है. तो 1.8% का इंट्राडे के ऊपर आपको नहीं मिलता, बट कंसिडरिंग द एंटायर सिनेरियो एंड स्ट्रेंथ ऑफ द कैंडल, अगर पोजीशन कैरी फॉरवर्ड की होती तो 1.5% आपको प्रॉफिट यही मिल जाता. ठीक है, गैप अप के अंदर. देन वेंकीज टच्ड ऑल टाइम हाई, आई सपोज. लेट मी शो यू डेली चार्ट एंड okay, pivots are still in the same, but we captured it on this day as explained you in the broadcast somewhere here, and price touched 2488 all time high. So this is still holding good. Let's move to Balkrishna. Balkrishna did not give any range breakout of previous days, as I said, but it looks like the way things are moving, it can be like positional swing trade for a few days. Madhusumi also did not made any as such move. HCL we discussed. Let me mark it on previous day range and see. Let's see if I'm not showing you on every chart, okay, that every 5 minutes setup, especially in Nifty and Banknifty I'm showing you because that's where like most of the people trade, or any other stocks which we discussed on a previous day that it has a possibility to on higher side. जैसे अपन HCL में डिस्कस किया था कि इन IT दिस इज द वर्स्ट लाइक डाउन साइड, अभी तक सबसे ज़्यादा फॉल जिसने दिया था, करेक्शन दिया था, दैट वाज HCL. सो हियर प्रीवियस डे की रेंज के हिसाब से अगर यहाँ पे एंट्री करते एंड यू वुड हैव
definitely you would have got for 1:2 or 1:3 risk reward. If you want me to check, let me show you. Yeah, from here, long position. Okay, something is wrong with this. So probably यहाँ ट्रेड करते, प्रीवियस डे के रेंज के अंदर स्टॉप लॉस रखते, एंड योर रिस्क टू रिवॉर्ड वुड हैव बीन एटलीस्ट 1:2. ठीक है. Then okay, let's change this. So this is 1:2. We got शिल्पा मेट के बारे में कल अपन ने डिस्कस किया था. However, एंट्री नहीं मिली. Kind of acted as a बैंक निफ्टी. प्रीवियस डे की रेंज के ऊपर था, बट एंट्री का सपोर्ट लेवल के पास नहीं था. बट पोजीशन वाइज दिस वेंट रियली क्वाइट गुड. इसने मूव अप्रॉक्स 6.6% का मूव दिया. फॉर टुमारो I have chosen only one stock, KEI, because of today's move. Let's see the candle. Okay, the candle size is quite big. You cannot go long here. I suggest for this to like retrace. इसको retrace होने दो. And once you see any reversal pattern here, you can go for long here for positional. Because ये chart मुझे अच्छा लगा देखने से. And आज का candle, you know, there was actually the point I wanted to teach you in this is open low. You see, the open low is same on the previous day. We should have figured that out. Closing of this candle was almost to its high. So this candle itself plus price was next up, closing of price was above pivot. So इसका मतलब यही था कि somewhere you have a high probability that it can go long. अगर यहाँ देखोगे तो यहाँ पर भी ऐसे सेटअप था, बट यहाँ पे कुछ 4-5 दिनों के बाद आपका एसएल हिट हो जाता क्लोजिंग के नीचे. ठीक है. बट नाउ दिस इज अ साइन इफ प्राइस कम्स बैक इमीडिएटली. जब प्रीवियस डे का जो लो था, जिस दिन क्लोजिंग हुई थी इसके नीचे, और उस दिन का अगर कैंडल का लो भी क्रॉस नहीं होता है और प्राइस वापस उस रेंज के अंदर ऊपर आ गया, जैसे पिवट के ऊपर आ गया, इट इज अ साइन इट वाज अ फॉल्स ब्रेकडाउन. नाउ इट हैज हाई प्रोबेबिलिटी टू गो हायर. एंड सी नेक्स्ट डे हाउ मच पॉइंट्स मूव डिड यू गेट. It is approx 13.24%, like 14% ही है, considering the gap up थोड़ा सा. Also, if you notice, आज का morning का open and low was same. So if you combine, see, stock market is not about one single strategy. You have to apply the entire knowledge, whatever you have, the points, connecting the dots, and you make it move. So, you know, with more studies, if you join the setup, make a setup which has more points, which covers in your favor, and then you go long, that's where you have high probability to get success. So this was the analysis for today, and let me remove the. So Paraj I had to show you only for just not for intraday. Intraday के ऊपर भी इसके अंदर अच्छा मूव आया, इसने previous day की रेंज को ब्रेकआउट दिया. However, if you notice, check in like 5 or 6 days का बैक का जो एनालिसिस था, in that I clearly told you कि Paraj is good for coming days. So अगर मैं इस डे की रेंज का भी लेता हूँ तो 318 से 364 प्राइस चला गया after like 4-5 days. So how much on like swing you could have considered this? You got like 14% plus gain in holding of 5 days. 5, 3, 4, 5 yeah. 5 दिन अगर Paraj को होल्ड किया होता तो your gain would have been 14%, which is beating twice the FD return. That too, time frame is just 5 days, where for a year FD return is like 6%. So more than 6%, like more than FD return you got in just 5 days. So try and understand the power of the analysis of chart. You don't need to see any news. Just try to read the psychology on the chart and try and understand how things work in the stock market. If you want to learn more, do message me for one-to-one. I do not take sessions in group. It's just a hobby, just I like teaching, so I take only the serious players who has time to learn and who has time to give to the stock market to make money. So this was the analysis for today. Look for opportunity here in KEI on the breakout of this range. I'm sure now you understood how to connect those dots with your technical analysis. Okay, so that should be all for today. I will be signing off for now. Take a good care of yourself. If you like, do share and subscribe. Don't forget that, please.